So, welcome to all the participants on the sixth day of this NEP orientation and sensitization program. And I would also like to thank all my dear colleagues, the technical people of IUCT, and especially Professor Prem Narayan Singh, the director of IUCT, for having faith in me that I could organize such kind of programs. So thanks a lot everyone from IUCT and also to all our dear participants that you are consistently being here and you all are here and very seriously you are attending this event. So it would be beneficial for you also that you could implement some part of it in your institution after attending this program or getting aware of various themes of नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट का दैट वी हैव टू अवेयर यू ऑल with the different themes so that you can implement it at a very basic level. You can implement it in your institution. So now Yes, I'll start sharing my presentation. Is it visible to all? yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Thank Okay. you. Thank you. So we'll be having first of all the lecture session, and at the end of this, we can have the questionnaire session. You can ask your query. Okay. So I'll start now. So the topic of today's discussion is the learner centric approach. जैसा कि हम जानते हैं कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आपने पढ़ी है, आई ऑल्सो शेयर्ड इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप सब प्लीज उसको एक बार रीड करिए। वहाँ पे बात की जा रही है कि वी नीड टू फोकस ऑन द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। ऐसा नहीं है दिस इज अ वेरी न्यू अप्रोच और अभी तक टीचर सेंट्रिक की बात हो रही थी, तो ये नया अभी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ही उठाई है। एक्चुअली लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को प्रमोट किया जा रहा है सिंस 1970 से, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी रही है जिसकी वजह से अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा है जिस जिस तरह से होना चाहिए। और हमें हम फैकल्टी मेंबर्स को हमें इसे प्रमोट करना चाहिए अपनी क्लासरूम में। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी हमने बात किया, 2 दिन से हम सुन रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल लर्नर्स के जनरेशन के लिए। तो वो कैसे होगा जब तक उनमें क्रिएटिविटी की फीलिंग नहीं आएगी और उनमें क्रिएटिविटी के फीचर्स नहीं आएंगे, कोलैबोरेटिव अप्रोच के फीचर्स नहीं आएंगे और क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हम कैसे ला सकते हैं? हमारी ड्यूटी क्या हो सकती है इसमें? हम फैकल्टी मेंबर्स किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं हमारे लर्नर्स को कि वो ये सारे जो फीचर्स हैं उनको वो गेन कर पाएँ। तो शायद वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है जिसमें टीचर की रोल में नहीं है, द लर्नर इज इन द की रोल इन द क्लास और इज इन द सेंट्रल रोल इन द क्लास। तो इसका the presentation will be dealing with this is the outline actually. The presentation will be dealing with few terms like didactics, pedagogy, andragogy, hudagogy. So those who are from the education background, they already know these terms very well. But those who are not, they should or they need to have an idea on all these things. क्योंकि पेडागॉगी और ये सारी चीजें अभी तक हम स्कूल लेवल तक सुनते आए थे कि स्कूल में क्या किस तरह की पेडागॉगी होनी चाहिए, बीएड एमएड और ये सारे कोर्सेज के अंदर। बट अभी ज़रूरत है हायर एजुकेशन में भी कि हमारे इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी क्या है, असेसमेंट की तरीके क्या हम अपना रहे हैं अपने क्लास में और क्या किस तरीके से हमारा कंटेंट डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करने लगी हैं अब, शायद इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात पे फोकस कर रही है और हर जगह पेडागॉगी की बात की जा रही है, इनोवेटिव पेडागॉगी की बात की जा रही है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में। स्कूल एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत सारे काम भी चल रहे हैं, एनसीईआरटी, सीआईईटी, स्कूल एजुकेशन के लेवल पे बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग। लेकिन हायर एजुकेशन में भी क्या इसकी ज़रूरत है, वो हमें समझना पड़ेगा। शायद इस प्रेजेंटेशन से आपको कुछ बेनिफिट हो और आपको लगे कि नहीं इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो है।
So we would be dealing with pedagogy, andragogy, heutagogy, these terms first of all, कि एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए इन सारी चीजों को लेकर. फिर व्हाट इज द नीड ऑफ पेडागोगी इन हायर एजुकेशन. बात वही है कि स्कूल लेवल में पेडागोगी की बात बहुत हो रही है, लेकिन हायर एजुकेशन में हम इनडायरेक्टली बहुत सारे जो है इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, जो टीचिंग एड है, वो हम वी जस्ट फॉलो इट, बट एक्चुअली हम पेडागोगी टर्म नहीं यूज कर सकते, इनडायरेक्टली वी फॉलो. लेकिन अभी बहुत सारे नए जो इनोवेटिव पेडागोगी की बात हो रही है, वो क्या है, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, दैट वी शुड नो. देन देयर इज टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी. दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात हम करेंगे. टीचर सेंट्रिक अप्रोच में टीचर इज इन द सेंट्रल रोल, बट लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में जो लर्नर है वो प्राइम पोजीशन पे है. आफ्टर दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर सेंटर्ड पेडागोगी इन 21st century. 21st century में किस तरह से हाउ द पेडागोगी इज इवॉल्विंग, आई कैन से. बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे, कोविड की बात हो, पेंडेमिक की बात हो, तो सब कुछ ही एक टेक्नोलॉजी पे आके सीमित हो गया सारी चीजें. तो आईसीटी के वहाँ पे इम्पोर्टेंस समझ में आना शुरू हो गई. क्लासरूम जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लेक्चर्स थे, वो उसकी वैल्यू वहाँ पे नहीं रही. तो इस तरह से हमें अपने आप को इवॉल्व करने की भी जरूरत है, पेडागोगी को भी इवॉल्व करने की जरूरत है, हमारे 21st century और हमारे आज के नीड को देखते हुए. आफ्टर दैट वी वुड टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक पेडागोगी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक पेडागोगी की बात भी करेंगे, और जो इनोवेटिव पेडागोगी है, जो एनईपी बता रहा है बार बार, उसकी बात भी करेंगे. फॉर एग्जांपल जो इनोवेटिव पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस है, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. जब तक हम करके नहीं किसी चीज को देखते हैं, तब तक हमें वो चीज उस तरह से याद नहीं रहती जो हम सुन के या देख के समझ पाते हैं. तो करके खुद से करना, दैट इज वेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग काइंड ऑफ थिंग. तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आती है. दूसरी बात आती है फ्लिप क्लासरूम की. आफ्टर दैट देयर इज फ्लिप क्लासरूम, और यू कैन से ब्लेंडेड लर्निंग. देन देयर इज gamification is there, use of ICT, inclusion of ICT in the teaching method is there, or problem based learning is also there. So these are the innovative approaches जिनकी हम बात करेंगे. उसके बाद है वी वुड ट्राई टू कोरिलेट. देन लास्टली द नेशनल एजुकेशन, व्हाट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 is saying about the learner centric pedagogy. So this is the outline of this presentation. So first of all, there are two terms, didactics और pedagogy. ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाएगी आपकी. So there is a term didactics. डायडैक्टिक्स इट इज एक्चुअली अ जर्मन टर्म, क्योंकि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो इसे समझना जरूरी है. डायडैक्टिक्स एक जर्मन टर्म है विच मीन्स टू टीच. Actually, didactics is dealing with the very systematic and organized delivery of the content, and content is also prepared by the teacher only. जो टीचर पढ़ा रहे क्लास में, कंटेंट इज डिजाइंड बाय हिम और हर ओनली, एंड दिस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड डिलीवरी ऑफ द कंटेंट टू द स्टूडेंट और टू द लर्नर. तो ये हो गया डायडैक्टिक्स. अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो असेसमेंट है वो भी टीचर डिसाइड करता है, कंटेंट है ऑल्सो बीन डिसाइडेड बाय द टीचर, और किस तरह से डिलीवर करना है सिस्टमेटिकली कंटेंट को, वो भी दिस हैज आल्सो बीन डिसाइडेड बाय द टीचर ओनली. So student here has very limited autonomy. There is a structured curriculum, or which is designed by the teacher. The objective of learning is very clear. जो टीचर ने बता दिया उसको बच्चों को याद करना है, उसकी बेसिस पे बच्चों को एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है. तो इट इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग. शायद अभी भी ये बहुत जगह फॉलो होता है. टीचर एंटर करते हैं क्लास में, वो कुछ अपने जो है कुछ जो स्टडी मटेरियल्स है उनके साथ में एंटर होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चे ग्रास्प करते हैं, बच्चे देन स्टूडेंट लर्न ऑल दोज थिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे गिव एग्जाम एंड दे गेट द मार्क्स. तो ये सारी चीजें इस पे ही रुकी हुई हैं अभी तक. हायर एजुकेशन में भी मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है ये सारी चीजें. जब मैं स्टडी पीरियड में थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैंने खुद ने देखा है कि
ये सारी चीजें बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। क्लासरूम में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं है बच्चों का, या बच्चों को इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दी जा रही है। सब कुछ टीचर गवर्न करना है, टीचर इज एवरीथिंग इन द क्लास। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच है? यस, ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच ही है। यहाँ पे सिर्फ डीलिंग हो रहा है हाउ से, that how should we deliver the structured content to the student, how we are going to assess the student, क्या assessment strategy होनी चाहिए, जो कि समेटिव असेसमेंट मेनली फॉलो किया जाता है लास्ट में एग्जाम लेके, उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट है वही है। यहाँ पे किसी भी तरह से हम लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख रहे हैं। व्हाट आर द नीड ऑफ द लर्नर, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है किसी चीज को लर्न करने की, उनकी नीड क्या है, किस तरह से वो क्या चीज पढ़ना चाहते हैं, क्या सब्जेक्ट में उनको इंटरेस्ट है, या उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। जो करिकुलम है वो क्या हमने उनके हिसाब से बनाया है, उनके समझने के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया है। हम असेसमेंट भी जो कर रहे हैं वो क्या डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं, जिसको अभी हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, या सिर्फ एक एक टाइम पे एग्जाम ले लिया बच्चा, स्टूडेंट इज वेदर प्रिपेयर्ड और नॉट, उसके उस समय उसकी क्या मानसिक स्थिति है, या किस तरह से वो प्रिपेयर्ड है, या कुछ और सर्कमस्टेंसेस में तो नहीं है लेकिन फिर भी उसने एग्जाम दे दिया, उसके मार्क्स कम आ गए, उस पर अभी जज देम। तो ये सारी चीजें जो है वो डायडेक्टिक्स अप्रोच दिखाता है। जबकि पेडागॉगी जो है ये और उसका इवॉल्व फॉर्म है डायडेक्टिक्स का। पेडागॉग एक्चुअली इज अ ग्रीक टर्म derived from the pedagogues. Pedagogues means the leader of child. तो वहां से ये टर्म आती है पेडागॉगी। एंड पेडागॉगी इज एक्चुअली डील्स विद द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट बाय द स्टूडेंट। यहाँ पे हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन और टीचिंग एड की बात नहीं कर रहे। ये वी आर आल्सो डीलिंग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजीज व्हाट शुड वी फॉलो, लर्नर्स की नीड को देखते हुए, जो अभी मैंने बात की कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो कितने कैपेबल हैं, उनका आईक्यू लेवल क्या है, वो किस तरह से चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं। हर एक बच्चे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको ध्यान में रखते हुए वी नीड टू चेंज द पेडागॉगी अकॉर्डिंग टू देम। हमें कौन से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, दैट इज द पेडागॉगी। So it is the science of teaching and learning. It is the deeper understanding of a concept by the student, and it deals with the overall development of the student, like उनका cognitive skill हुआ, या emotional जो है फीचर है, या social growth के लिए काम करने के ऊपर पेडागॉगी काम कर रही है। जो इनोवेटिव पेडागॉगी है, इट एक्चुअली फॉस्टर्स देयर एक्टिव एंगेजमेंट विद द क्लासरूम, एंड इट आल्सो डेवलप्स, जो भी 4 C's की बात की जा रही है, एनईपी में भी बहुत बार ये बात की गई कि हमें हमें बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। वी नीड टू एनहांस द क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स, कोलैबोरेटिव स्किल्स को हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। आफ्टर दैट देयर इज कम्युनिकेशन। तो ये 4 जो सीज हैं वो कैसे इंक्रीज हो सकते हैं, उस पर हम काम करना चाहते हैं। और उस पर काम हम किस तरह से कर सकते हैं, हम एक परफेक्ट, या जो हमारे हम कह सकते हैं परफेक्ट भी नहीं, जो एक पर्टिकुलर पेडागॉगी, ऐसी पेडागॉगी जिससे उस बच्चे को वो सूट करे। और हर एक बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो अलग अलग है, उसको देखते हुए हमें उसके ऊपर एक डिफरेंट जो पेडागॉगी है जो उसको सूट कर रही है वो हमें इम्प्लीमेंट करने या इम्प्लाई करने की जरूरत है। और उनमें तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ सकती है लर्नर्स के अंदर। सो बेसिकली द पेडागॉगी here is dealing with the learner centric approach. यहाँ पे learner is in the prime position in the class, and it also focuses on why, that why we are delivering such kind of content to student। अगर बच्चे को हमने ये कंटेंट पढ़ाया, उसके यूज में कहाँ आ रहा है ये, क्या वो डेली लाइफ सिचुएशन में इस कंटेंट को वो यूज कर पाएगा, क्या वो जो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में या किसी और जगह पे उसका कहीं ये एप्लीकेशन है, हम जो कंटेंट उसको पढ़ा रहे हैं, या हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। सो इट इज डीलिंग विद द टर्म वाई। After that, we will move to the difference between the basic difference between didactics and
पेडागोगी जो फीचर है, डेफिनेशन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, डायडैक्टिक्स इज द साइंस ऑफ टीचिंग, जहाँ पे क्लियर एंड सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मेन कंसर्न. But in pedagogy, it is mainly focusing on the teaching strategies, technique, entire educational process from their teaching and learning. जब तक और वो कहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उस एजुकेशन को जो उसने गेन किया है वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो कैसे उसको डेली लाइफ सिचुएशन या डेली लाइफ सिनेरियो से डील करने के लिए वो उसको कैसे यूज कर सकता है. दिस इज ऑल अबाउट पेडागोगी. क्लास में सिर्फ पढ़ा देना और बच्चे मार्क्स लेकर आ गए, दैट इज डायडेक्टिक्स. बट पेडागोगी कि उनकी वो रियल लाइफ सिनेरियो से भी कैसे डील करें, उनकी और बाकी बच्चों की जो नीड है, उनको कौन से कंटेंट पढ़ाने की जरूरत है, किस तरीके से पढ़ाने की जरूरत है जिससे उनको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. दिस इज ऑल अबाउट पेडागोगी. टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड की बात की जाए तो डायडेक्टिक्स जैसे मैंने बताया इज कम्प्लीटली टीचर सेंटर्ड. टीचर इज इन द प्राइम रोल इन द क्लासरूम एंड इट इज really based on the theoretical knowledge. But in learner-centered teaching approach, yeah, this is the learner-centered teaching approach. Pedagogy is and adopts the student's need. स्टूडेंट की क्या नीड है उसको समझना हमारे लिए जरूरी है. यहाँ पे द स्टूडेंट्स आर they have the more autonomy. They can question between themselves. There is question between the peer to peer question is there. Peer could ask questions to teachers. So this is a more interactive kind of classroom as in the case of pedagogy. And it would develop the critical thinking in the students and also involves the active participation of the student in the classroom. फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात की जाए तो मैंने बताया ऑलरेडी कि ये जो एजुकेशनल फिलोसफी है उसमें जर्मन टर्म है डायडेक्टिक्स, ट्रेडिशनली एम्फेसाइजेस द टीचिंग एम एंड सब्जेक्ट नॉलेज and how we are delivering the content to the learner or the student. But pedagogy is a Greek word. It is a broader perspective, broader educational perspective from teaching to learning and where they could apply that content in their life. आफ्टर दैट देयर इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम. सो दिस इज completely restricted to this is the completely traditional classroom kind of case where the restricted to classroom only. And in pedagogy it deals with the outside of the class also, because they have to deal with the real life scenario, real life problems. पेडागॉगी, एंड्रागॉगी और ह्यूटागॉगी ये कुछ नए टर्म्स हैं जो मैं फिर बताऊंगी कि जो टीचर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं उनको ये सारे टर्म्स पता होंगे, जो नहीं है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है. पेडागॉगी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये एक साइंस है वेयर जो हमारे जो टीचिंग मेथोडोलॉजी हम क्या यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड को देखते हुए, दैट इज पेडागॉगी. और यहाँ पे जो टर्म था इट वाज कॉइन्ड बाय J.F. हर्टबर्ट इन 1776 and andragogy term was coined by Malcolm Knowles in 1970. And it mainly focuses on the practices used to teach adults. Andragogy, andra means adult, gogy means teaching. So how we could teach the adults, those who are above 18 years of the age. So here we can say that the student centric approach is this, and the learners here are self directed, because the अब करें अगर हम पेडागॉगी में हम चाइल्ड लर्निंग की बात करते हैं. सो अ चाइल्ड इज वेरी न्यू टू दिस एनवायरमेंट और उसके लिए सब कुछ नया है, उसके कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस नहीं है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है. सेल्फ कंसेप्ट इज नॉट देयर इन द केस ऑफ अ चिल्ड्रन. तो उनको एक जरूरत है किसी फैसिलिटेटर की, नॉट नॉट द फैसिलिटेटर, अ गाइड की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, दोज who can guide them in the right direction. उनको क्या पढ़ना है, किस तरह से उनका इवेल्युएशन होना चाहिए, उसके लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है. बट एंड्रागॉगी की केस की बात करें अगर हम, तो एडल्ट टिल द एज ऑफ 18 adult has already gone through different kind of so many of experiences till the age of 18. So they are the independent learners, we can say. They are now the independent learners. So उन्होंने दे हैव मेड देयर अ सेल्फ कंसेप्ट इन देम. उनका एक खुद का कंसेप्ट बन चुका है क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने देखे हैं, वो पढ़ चुके हैं 18 साल की उम्र तक स्कूल में भी बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने गेन किए हैं, तो उनका एक प्री माइंडसेट है. वो दे आर द सीजन्ड लर्नर, वी कैन से दे आर द सीजन्ड लर्नर.
तो चाइल्ड जो है दे आर ऑल्सो द स्लो लर्नर्स, जबकि एडल्ट जो है दे आर द फास्ट लर्नर्स, क्योंकि उनका एक प्री माइंडसेट है, वो चीजों को ग्रास्प करने के लिए दे आर वेरी मच, वी कैन से दे आर रेडी टू to learn new things. So, andragogy, it is a student-centric approach, and learners here are the self-directed. उनको पता है till the age of 18. After that, what they want to go for, whether they want to go for engineering courses, for medical courses, or they want to go for any other skill courses की बात की जा रही थी अभी, या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, या मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनकी एक खुद की एक इंडिपेंडेंट हो गए हैं वो, तो उनकी एक खुद की चॉइस है। अब ह्यूटागॉगी की बात की जाए तो ये मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एंड्रागॉगी है, वेयर द स्टूडेंट आर कंप्लीटली और दे आर द सेल्फ मैनेज्ड लर्नर्स, and it is a student centered instructional strategy. They are highly motivated here. In the case of Hutagogy, the learners are highly motivated, they are curious, they are passionate, और इस तरह के लर्नर्स ही कुछ नया या इनोवेटिव कर पाते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हम बात कर सकते हैं ह्यूटागॉगी की, कि अगर कोई 50 इयर्स का है, 40 इयर्स का है, 60 इयर्स का है, लेकिन उनके अंदर एक स्पोर्ट्स को लेके बहुत रुचि है, या पढ़ने को लेकर के बहुत ज्यादा रुचि है, तो वो अपनी लाइब्रेरी मेंटेन करेंगे, उनकी पढ़ने की हैबिट है, वो पढ़ेंगे चीजों को। और जो स्पोर्ट्स में है, वो कितने भी एज है उनकी, वो उसको खेलेंगे किसी स्पोर्ट्स को। तो ये वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं इस तरह के जो लर्नर्स हैं। या हम रिसर्च स्कॉलर्स की बात कर लें अगर, तो रिसर्च स्कॉलर्स भी ह्यूटागॉगी के केस में ही आएंगे, क्योंकि उनको जो हमारे गाइड हैं, मेंटर जो हैं, उनकी नीड बहुत कम पड़ती है। उनका खुद का एक आइडिया होता है, दे इम्प्लीमेंट इट एंड दे एक्सपेरिमेंट इट, एंड आफ्टर दैट दे just invent or innovate something new in the laboratory. So yeah, these learners are very motivated, they are very curious, they are curious to know new things, they are very passionate. So all these things are there in the case of Hutagogy. So in case of Hutagogy, there is a need of the learner has completely been gone. यहाँ पे हम बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह के गाइड की, मेंटर की, टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। So it emphasizes the development of autonomy. The more autonomy is there, or the maximum autonomy is there in the case of Hutagogy. Capacity and capability. Hutagogy looks to the future in which knowing how to learn will be the fundamental skill, given the pace of innovation and changing structure of communities and workplaces. The term was given by Stewart Hayes and Chris Kenyon in 2000. तीनों के डिफरेंशिएशन की बात की जाए, आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा इस टेबल से। So the first aspect is the learner role. So in the case of pedagogy, the learners are in the passive position. They are the passive absorber in the classroom. Whatever the teacher is telling them, they are just gaining them. After that, there is andragogy. This is more advanced form of pedagogy. Here, they are the adults. The learners are the adults, and it is self-directed. They are the self-directed learners because they have already a pre-mindset till the age of 18. They have acquired more. They are more independent now, and they have a concept in them. After that, there is Hutagogy. Here, the learners are self-managed learners, and it can be the case of any age, whether they are 40, 50, 60, 70. ये इनके अंदर जो मोटिवेशन है वो कभी नहीं जाती इस तरह के लर्नर्स में. They are highly motivated. Then the second aspect is the learning focus. The focus is on the content driven and the teacher decide. हम कह रहे हैं करीब करीब डायडेक्टिक्स और पेडागोगी की कुछ कुछ बातें सिमिलर हैं, बट ये अप्लाई करने के बेसिस टर्म पे आप मत जाइए, एप्लीकेशन किस तरह से हो रही है उस पर हमें देखना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह पे पेडागोगी टर्म ही यूज होती है, एंड्रागोगी और ह्यूटागोगी टर्म्स यूज नहीं होती, लेकिन हम कहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं उसको देखना हमारे लिए जरूरी है। लाइक इनिशियल केस अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की भी, हायर एजुकेशन में जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, ही और शी इज ऑल्सो एन अडल्ट, तो उसके लिए हम अगर बात करें तो वहां पे हम एंड्रागोगी टर्म यूज कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली जब वो क्लास में जाता है, इनिशियल
मंथ्स, फ्यू ऑफ इनिशियल मंथ्स में टीचर की जरूरत वहाँ पे पड़ती है किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो वो केस पेडागोगी का होता है। इन फ्यूचर इन द सेकेंड सेमेस्टर और द नेक्स्ट ईयर दे गो फॉर इंटर्नशिप, और जब इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ पे एंड्रागोगी अप्लाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे खुद से जाके उनको कोई एक्सपेरिमेंट लगाना होता है, खुद से जाके फील्ड वर्क में उतरना पड़ता है और काम खुद से करना पड़ता है, तो वहाँ पे एंड्रागोगी अप्लाई होने लगती है। रिसर्च के फील्ड में जब जाते हैं तो वहाँ पे वो कम्प्लीटली हुटागोगी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टेजेस के ऊपर है, हम कहाँ पे किसको किस टर्म को अप्लाई कर रहे हैं या कहाँ पे किस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, हम टर्म्स पे ना जाते हुए हमें ये देखना है कि उसका मीनिंग क्या है, टर्म का मीनिंग क्या है और हम उसको किस सेंस में अप्लाई कर रहे हैं। देन डिसीजन मेकिंग की बात करें तो पेडागोगी में टीचर इज डिसाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग। इन केस ऑफ एंड्रागोगी, नाउ हियर दे आर द एडल्ट, so they prefer the collaborative decision, collaborative discussion is also there. So these things are there in the case of andragogy. In heutagogy, learner decide each and everything, and which is supported by others. Maybe the guide support them. Resources की बात अगर करें तो टीचर इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द स्टूडेंट्स। लर्नर, इन द केस ऑफ एंड्रागोगी, लर्नर सीक एंड यूज द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ऑल्सो ऑनलाइन मटेरियल हुआ या लाइब्रेरी से बुक्स हुए या अदर जो मटेरियल्स हैं, अदर रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल्स, वो खुद से सर्च करके अपना एक खुद का एक बैंक बना सकते हैं रिसोर्सेज का, और वहां से वो स्टडी प्रेफर करते हैं। इन केस ऑफ यूटागोगी, दे आर द actively create their own resources. In the case of Hutagogy, वो रिसर्च करते हैं, कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं, so the resources are their own. Now, 5 assumptions of adult learner की अगर बात की जाए तो the first one is the self concept. So जैसे कि बात की मैंने I already have discussed it that adults are 18 years of the age, and till acquiring the 18 years of the age, they already have gone through so many different kinds of experiences. So they have already prepared a concept in their mind, and they are independent learners. After that, there is adult learner experience. So they have vast prior experience till the age of 18. Readiness to learn, they are always ready to learn something new, something very exciting, so that they can do something good. In order to just they are learning whatever they are learning, they just want to do it for a good reason. That is why they are learning. Orientation of learning की बात की जाए so whatever they are learning, they want to apply it into their real life सिचुएशन। एडल्ट की ये एक अंदर से इच्छा रहती है कि वो कोई कोर्स कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, so after that they just want to apply in the real life scenario after they are getting the job. So all these things are there in the case of adult learners. Motivation to learn, as the human grow older, their motivation to learn become internal, so these adults are very highly motivated. So these are the 5 concepts of adult learning. Now, this is the evolving theory of learning, which was given by Simon Whitmore in 2021. Here we can see that as pedagogy is there, it is teacher led, teacher is designing, the students are in receptive mode, they are just receiving all these things. Andragogy mein, the adults are self directed, the objective based, instructor is only there for the guidance. In Kutagogy, it is the learners are completely self-managed learners, and they are problem solving, self-adjusting. So here with this, the autonomy of the learners is increasing. With the highest autonomy is there in the case of Kutagogy, because there is nobody to judge them or to whatever the content is also is there is of them, and whatever they are doing they are free to do, whatever they are thinking they are free to think, they are highly creative because nobody is going to object them. So in the case of pedagogy, they are completely free of whatever they want to do. So in such cases, some of the learners really create something or invent something big. In andragogy and heutagogy,
अगर बात की जाए तो एंड दिस दे फॉलो द डबल लूप लर्निंग इन सिंगल लूप लर्निंग इज देयर so we can see there are three steps assumptions technique and results so in single loop learning the focus is on techniques the teacher is only looking at the technique what they want to deliver and how they want to deliver in single loop learning, the focus is on the technique only, like what they want to deliver to the student and how they want to deliver a thing or content to the student. Result is what would be the result? कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हैं उन्होंने क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया लाइक अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग एनी कंसेप्ट इन द क्लासरूम एंड द student is feeling bored or he or she cannot be able to gain good marks after that they will there will be the problem solving the the teacher will somebody has okay so, what I was explaining, there are three steps, assumption, techniques, and result. But in single loop learning, it is mainly dealing with the techniques and result. Techniques means what the content the teacher wants to deliver it to the student and how he or she wants to deliver it to the student. ये उन्होंने एक डिलीवरी कर दी बट स्टूडेंट को वो कंसेप्ट या उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा इट इज बोर्डम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी इफ इट इज देयर तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू गेन गुड मार्क्स अब स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आए नाउ द इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाया बच्चे को कि उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो वो उस केस में क्या करेंगे सिंगल लूप लर्निंग में वो अपनी स्ट्रैटेजी को बस बदलने की कोशिश करेंगे वो हाउ पे ध्यान देंगे कि नाउ हम कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा है बट इन केस ऑफ डबल लूप लर्निंग टेक्निक्स और रिजल्ट के अलावा दे ऑल्सो फोकस ऑन assumptions दैट वाई वी डू एंड व्हाट वी डू हम लर्नर्स को जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं और हमें किस तरीके से पढ़ाना है उस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए और अगर बच्चे ने अच्छा या कम नंबर पाया हमने जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी अपनाई और बच्चे ने अगर अच्छे मार्क्स पाए तो अगर अच्छे मार्क्स पाए तो भी देर इट इज मोर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उसको भी हमें एग्जामिन करना है उसको भी वी नीड टू रिव्यू दैट कि अब हम बच्चे ने अगर अच्छे मार्क्स पाए तो हमने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई होगी और उसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं अगर बच्चे ने कम मार्क्स पाए हैं तो उसको भी हमें एक रिव्यू करने की जरूरत है कि हमें शायद कंटेंट चेंज करना है या उस बच्चे ने कम मार्क्स पाया तो उसके लिए हम और क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं या कंटेंट को किस तरह से डिलीवर किया जाए तो ये एक डीपर रिव्यू प्रोसेस है इन केस ऑफ double loop learning. So in andragogy and heutagogy, they are following the double loop learning, and they are all going through. They are going to through all these three steps like assumption, technique, as well as result. Not only the technique and result, they are also dealing with the term why. They are reviewing the thing in a deeper manner, in a deeper sense that किस तरह से हमें अपने आप को एडजस्ट और फ्लेक्सिबल बनाना है कि स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो उस पर कोई इफेक्ट ना आए नाउ अभी जैसे स्टार्टिंग मैंने बात की कि पेडागोगी टर्म जो है वो स्कूल लेवल पे बहुत बात की जाती है लेकिन हायर एजुकेशन पे इसका क्या इम्पोर्टेंस है क्या ज़रूरत आ गई कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इस पे बहुत एम्फेसाइज कर रही है फोकसिंग ऑन द इनोवेटिव पेडागोगिकल स्ट्रैटेजीज आल्सो तो उसकी बात अगर उसको समझने की कोशिश आप करें तो पहला जो हमारा एस्पेक्ट है द फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग सो पेडागोगी शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम ट्रेडिशनल टीचिंग जो ट्रेडिशनल रोट लर्निंग अप्रोच था ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग का टू स्टूडेंट लर्निंग उसको हमें अब शिफ्ट करने की जरूरत है और learner centric approach is more important now and it emphasizes understanding the students की जो नीड है उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है लर्निंग स्टाइल है उनकी जो किस तरह से वो सीखना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट their active engagement their active collaboration in the classroom is very important
and there we should know about their background also, because this also matters. The second aspect is the effective teaching method. So pedagogy equips educators with effective teaching strategies, ensures the instructor use methods aligned with the learning outcome. हमें learning outcome को भी we need to give importance also. उसको भी देखना है. Enhancing the student retention. जो retention rate है students की, अगर हम एक effective pedagogical practice apply कर रहे हैं students के ऊपर, then definitely they are going to have a higher retention rate. That is also a main purpose or main aim of using the pedagogy in higher education. सही तरीका अपनाने से, सही कंसेप्ट अपनाने से, सही स्ट्रैटेजी अपनाने से शायद बच्चे को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट जो है वो उसका रिटेंशन रेट बढ़ सकता है. क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो फीचर्स हैं वो भी एनकरेज करता है पेडागॉगी. एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द एक्टिव लर्निंग, डिस्कशन, एनालिसिस, एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द हायर एजुकेशन लर्नर्स. लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स की बात की जाए, it also fosters beyond the content knowledge such as communication, collaboration and adaptability. ये सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स के लिए भी पेडागॉजी को अप्लाई करना या इनोवेटिव पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज को अपनाना अपने क्लासरूम में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन के लर्नर्स हों या एजुकेटर्स जो हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस तरह से कौन सी पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज को अपनाएं, जिससे उनके लर्नर्स को कोई भी कंसेप्ट समझने में आसानी हो, और वो किस तरीके से उससे डील करें जब वो ऑन फील्ड जाएं या किसी जॉब में जाएं, तो वहाँ पे वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को डील कर पाएँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है. कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए educators use pedagogical feedback to improve their teaching methods and enhance the overall learning experience. So all these things are there, that is actually showing that there is a very we can say it's very important for us to focus on the pedagogical strategies, and we should imply or all these things in higher education also, in our classroom also. In 21st century, how the pedagogy is changing. क्या किस तरीके के जो इवोल्यूशन है वो पेडागोगी के अंदर आए हैं 21st सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे अभी स्किल की बात जो की जा रही थी, बहुत दो दो लेक्चर्स हो चुके हैं कि हमें स्किल्ड लर्नर्स चाहिए. तो वहीं से बात आती है, स्किल्ड लर्नर्स हमें कैसे मिलेंगे जब हम क्लासरूम में बच्चे को जो पढ़ाने का हमारा तरीका है वो इफेक्टिव होगा शायद, और उनको चीजें जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी. तो उसके लिए हमें अपनी पेडागोगी को चेंज करने की और इवॉल्व करने की वी नीड दिस इज द इम्पोर्टेंस, दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर अस. So teaching has expanded to include new forms of learning, like more interactive learning should be there, collaborative projects should be there, online और remote learning is to be there, जिससे कि फ्लेक्सिबल स्केड्यूल बन जाए, कि एक ऐसा रिजिड स्केड्यूल नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पे ही स्टूडेंट को ये क्लास अटेंड करना है. उनके पास भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एनी टाइम दे कैन अटेंड द क्लास. लाइक अभी स्वयं पोर्टल की बात हो रही थी कि स्वयं पोर्टल पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, और एनी टाइम दे कैन गो एंड रजिस्टर देमसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ कोर्स. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी भी जरूरी है कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने टाइम और सारी चीजों के अकॉर्डिंग वो एक कोर्स को अटेंड करें, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है स्टूडेंट्स को. तो रिजिडिटी शुड नॉट बी देयर. तो ये 21st सेंचुरी की डिमांड है. आफ्टर दैट हम देखें कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज और कल्चरल डिफरेंसेस आर आल्सो बीइंग टेकन इनटू अकाउंट. सो हमें अब स्टूडेंट्स के जो रिक्वायरमेंट है, उनकी न्यू वेज टू एक्वायर एंड कंस्ट्रक्ट एंड ऑर्गेनाइज लर्निंग, सारी चीजों को देखते हुए भी हमें अपनी पेडागोगी को चेंज करने की, इवॉल्व करने की जरूरत है. अभी बात आ रही थी कोविड की, पेंडेमिक की, तो सब कुछ आईसीटी पे डिपेंडेंट हो गया था, सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग हो गई थी, क्लासरूम भी गूगल मीट और इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे थे. तो इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए भी we need to change ourselves, or we need to know about all these things, the different how we can apply the ICT skills in the teaching. Pedagogy is also shifting for the focus from basic rote learning, जो boring एक चल रही थी क्लासरूम अभी तक. टीचर इज इन द प्राइम रोल, वो पढ़ा रहा है, बच्चे पीछे सीट पे बैठे हैं और वो सुन रहे हैं. तो इस तरह के जो अप्रोच है वो अब हमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है. So to application based learning, and so that the student involved in higher order
or higher order learning, and they this include the critical thinking skill, effective communication, और उनको ज़्यादा autonomy भी मिल पाएगी इन सब सारी चीज़ों से. So all these things are there. टीचर सेंटर्ड पेडागोगी अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ विद एग्जांपल, तो इट इज द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लिसाइट इंस्ट्रक्शन, and it is an approach to teaching where the teacher assumes the role of the primary source of knowledge dissemination and authority in the classroom. And for example, there is a high school math teacher is in there in a classroom, and he is solving a quadratic equation. And in quadratic equation, there are so many steps, and he is writing down all those steps on the blackboard. And a student at the back, they are just writing all those things in their notebook. And after that, the teacher will give them a few of the similar kind of examples for the homework, and next day they just come with all those things, and the teacher will review the solution and answer any question if they have. So here the teacher is in the center figure, imparting knowledge, directing the learning process, student playing a passive absorber role of just absorbing the information and practicing it, and what they have learned, practicing what they have learned. So यहाँ पे किसी भी तरह का active involvement classroom में नहीं हुआ. It is a very rote and boredom kind of learning. टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो है टीचर सेंटर्ड पेडागोगी का जो एक पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे. The teacher is only focusing on the blackboard and writing all these things on the blackboard, and students are feeling very bored in the classroom, and they are just looking at the blackboard only. So this is a picture of learner-centered pedagogy. Here you can see that the students are looking very happy because they are engaged as somewhat. This also prioritizes the student engagement in the classroom, their active participation in the classroom, and this is also meaningful learning experiences. This actually enhances the meaningful learning experiences. So such kind of learning or such kind of pedagogy we need to initiate in our classes also. द फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग, जो डेलर्स कमीशन की बात थी, वहाँ पे आप सभी ने पढ़ा होगा उस रिपोर्ट को. तो यहाँ पे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हाउ कुड वी अचीव द फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग? बाई लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ओनली वी कुड अचीव ऑल दिस थिंग्स. तो दो जो फोर पिलर्स हैं, द फर्स्ट वन इज द लर्निंग टू नो. हमें जानना है, वी शुड अक्वायर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जस्ट नॉट टू गेट द डिग्री ओनली. हम एट एनी स्टेज ऑफ टाइम we should know all these we should know the things or the content or the concept कि हम उसको डेली लाइफ सिचुएशन में भी कहीं अगर हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तो वी वुड बी कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स. तो उसके लिए भी हमें नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड अप्लाई आवर नॉलेज और आवर कंसेप्ट टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. लर्निंग टू डू, डेवलपिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एबिलिटी. जो हमने एक्वायर किया है उसको हम कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये सोशल हार्मनी में रहना बहुत जरूरी है. सोशल कोहेशन और हार्मनी विद द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लर्निंग टू बी, हमारा एक सेल्फ रेस्पेक्ट होना जरूरी है. हमारे वैल्यूज, हमारी बिलीफ, हमारी आइडेंटिटी के लिए हमें जो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना पड़ेगा. और दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की बात करें तो फर्स्ट इज द एक्टिव लर्निंग. एक्टिव लर्निंग एक्चुअली इनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस. वही हमारा मेन मकसद है और अभी दैट इज ओनली आवर एम. So the first one is the problem-based learning (PRBL). So student is being given with such certain kind of real-world problem or case studies or applying their knowledge to find solutions by the teacher. And then cooperative learning is there. Students actually collaborate with each other in the classroom, and they interact with themselves and they find the solution to a problem. Then the flipped classroom is there. The student actually engage with the content outside of the class, and they use the classroom time for any kind of discussion with the facilitator or the teacher or their peer, and activities for their deeper understanding. Inquiry-based learning is there. In this approach, the student explore the question, problem, and topic of interest. Students actually formulate questions, investigate and gather the information. They then analyze their data
and finally they conclude what their findings are. The benefit of inquiry based learning is it fosters the critical thinking, research skills, and curiosity in the learners. There is project-based learning is there, PBL, which is known in short. The students work on the extended projects. Projects are given by the teachers, and that actually addresses the real-world challenges. The process is they identify a problem or the topic. They research, they plan, they create the project, present their work to peers or the community. What skills they developed by this kind of pedagogy, there is the collaborative जो skill है वो उनके अंदर develop हो सकती है, creativity will get developed in them, and the problem solving जो ability है, this also be this can also be developed in them. Experiential learning, which is one of my favorite pedagogy, learning through direct experience, or we can say learning by doing. So often this is done often outside the classroom. Classroom में नहीं हो सकता क्योंकि हमें करके देखना है, किसी साइंस स्टूडेंट की बात की जाए, केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात की जाए, या माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि मैं मेरा बैकग्राउंड माइक्रोबायोलॉजी है, तो मुझे जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता था, वी जस्ट नीड लैबोरेटरी, एंड वहाँ पे जाके हम एक्सपेरिमेंट करते थे और करके देखते थे। तो वो शायद एक बेनिफिशियल रहती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, वो हमें हम जो करके देखते हैं वो हमें हमेशा याद रहता है। तो इंटर्नशिप यहाँ पे है, स्टूडेंट अप्लाई क्लासरूम नॉलेज इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग्स, और फील्ड ट्रिप्स हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सप्लोर environments related to the subject. Service learning combine community service with the academic learning. Student-led discussion and debate. So here the student take the lead in the discussing topic, analyzing viewpoint and defending arguments. Benefit क्या है इसके? Enhances the communication skill in the student, critical thinking in them, and understanding the diverse perspective. Teacher versus learner centered pedagogy को in short अगर we need to differentiate, then here the role of the teacher in the teacher centered pedagogy, they are in the central authority, they are the central authority in the classroom, and the sole source of knowledge dissemination. And in learner centered pedagogy, they are the facilitator, guide, and co-learner. They are also try to learn with the students, and the focus is on the content delivery only. In here, the active learning and exploration is there. Student engagement, here in the teacher-centered pedagogy, they are the passive absorber. But in case of the learner-centered pedagogy, the students are the active explorer, and they are also they can also develop the critical thinking in them. Decision making की बात की जाए, तो teacher is deciding each and everything, and in the case of learner centered pedagogy, the shared decision making is there, and students have some sort of autonomy. अब असेसमेंट अप्रोच की बात करें अगर हम, तो टीचर सेंटर्ड पेडागॉजी में समेटिव असेसमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एग्जाम और उसकी बेसिस पे मार्क्स. बट इन केस ऑफ लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज आल्सो देयर, सेल्फ असेसमेंट इज आल्सो देयर. डे टू डे बेसिस के ऊपर, इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर हम असेसमेंट को प्रमोट करते हैं. एनईपी 2020 भी फॉर्मेटिव असेसमेंट को प्रमोट करने की बात करती है. क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी कंट्रोल्ड. Here, the student they are having the autonomy, so classroom is flexible, collaborative. Learning goals are very clear, predefined curriculum is there. The learning goals are also very predefined. And in case of learner centered approach, student interest and real world relevance को देखते हुए, yeah, the learning goals are changing. Interaction patterns is there, teacher to student only. But in case of learner-centered pedagogy, peer to peer, they are free to interact with themselves. Learners are free to interact within themselves also, and student to teacher interaction is also there. Learning outcome की बात करें तो knowledge acquisition is the learning outcome, and here the learner in learner-centered pedagogy, deep understanding and application-based knowledge they are gaining. तो हाउ टू इम्प्लीमेंट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन आवर इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर आप पूछते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई ठीक है, बट हम अपने क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल करिकुलम हमें देखना पड़ेगा. स्टूडेंट के नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें वी नीड टू एडजस्ट द करिकुलम. आफ्टर दैट इंटरैक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है. यूज द एक्टिव लर्निंग टेक्निक इन द क्लासरूम, लाइक मोर एंड मोर डिस्कशंस को इन्वॉल्व करिए, ग्रुप डिस्कशंस को इन्वॉल्व करिए. कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर है उसको सिमुलेशंस के थ्रू पढ़ाने के लिए कोशिश करिए. देन स्टूडेंट फीडबैक ज़रूरी है.
टीचर को भी एक टीचर को खुद में भी एक फीडबैक बच्चों से लेना ज़रूरी है ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, कहाँ पे उनकी कमी रह जा रही है किसी कंसेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए, वो ज़रूरी है। सो रेगुलर collection of the feedback from the student is very important on their teaching, what kind of teaching method they are applying. Real world connections की बात की जाए तो incorporate the practical examples relevant to students lives into the session. Collaborative projects encourage group work, peer to peer learning is there, should be there. Technology integration is also important. Incorporate the digital tools that enhance the learning like online resources, interactive platform, etc. जो हमारे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, इनिशिएटिव्स दे हैव लॉन्च्ड टू प्रमोट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच फॉर द क्वालिटी ऑफ फॉर द टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. So some of them are उच्चतर आविष्कार योजना UAY, which actually promotes the industry academia partnership and encourages the student to work on innovative projects. So mainly it fosters the experiential learning to solve the real world problems. And then there is Swayam portal. You all must be knowing all this thing. This portal. This is the study webs of active learning for young aspiring minds. There are thousands of, I think more than 2 to 3 thousand of courses are available on the Swayam portal, which and the resources are there, making education accessible to learners across India. And it is also self-paced learning, and learners' autonomy is there in the case of such kind of online courses. There is टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह के कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं. एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय सपोर्टिंग द फैकल्टी डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्रूवमेंट की भी बात यहाँ पे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए भी काम हो रहे हैं. पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग जो है PMMNMTT, which has now become MMTTC, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर. सो इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो भी फोकस करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर फैकल्टी मेंबर्स, उनको ट्रेन करना, उनको नए कंसेप्ट से अवेयर कराना. इस तरह के वर्कशॉप्स आपके लिए ज़रूरी हैं करना, तभी आप अवेयर हो सकेंगे इन सारी चीज़ों को और अपने क्लासरूम में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकेंगे. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करिए. देन देयर इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है बच्चों को. दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक्स आर देयर एंड एजुकेशनल मटेरियल्स टू लर्नर्स एंड एजुकेटर्स आर आल्सो देयर. सो नाउ NEP 2020 प्रमोटिंग द इनोवेटिव पेडागोगी की बात हो रही थी अभी तक. तो इनोवेटिव पेडागोगी वेयर द लर्नर इज एक्टिवली इन्वॉल्व और दे आर द एक्टिव पार्टिसिपेंट. तो इसमें इनोवेटिव पेडागोगी में आते हैं मेनली एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग में फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग की बात होती है. ब्लेंडेड लर्निंग मीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की बात हो रही है, इससे ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग बोला जाता है इसको. Third one is the problem-based learning, and the fourth one is the gamification. The first one is the experiential learning. तो यहाँ पे कोर्स लर्निंग साइकिल को समझना आपके लिए जरूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए. देयर इज द फर्स्ट टर्म इज देयर कंक्रीट एक्सपीरियंस से शुरुआत होती है. मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ वेरी लाइटर नोट पे, कि अगर एक क्रिकेटर है फॉर एग्जांपल विराट कोहली, वो एक मैच खेलने जाते हैं T20 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. तो वो उन्होंने जो मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो एक हो गया कंक्रीट एक्सपीरियंस. उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया उस मैच को खेल के. आफ्टर दैट जब वो अपने चेंजिंग रूम में हैं बैठे हैं, देन वो रिफ्लेक्ट करेंगे कि शायद उन्होंने जो ज्यादा मार्क्स बनाए या कम जो स्कोरिंग हुई वो किस वजह से हुई, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी जिससे कि वो हम रन अच्छे स्कोर कर पाते. तो वो हो गया रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जब वो सोच रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं उन्होंने किस तरह से मैच खेलना चाहिए था. आफ्टर दैट देयर इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन. अब उन्होंने एक वो रिव्यू करने के बाद वो एक अपने दिमाग में एक कंसेप्ट और एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई दोबारा से कोई इस तरह का मैच खेलने जाएंगे तो वहां पे वो इस नए कंसेप्ट को अप्लाई करके देखेंगे कि शायद वो स्ट्रैटेजी अपनाने से वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए.
आ गया उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो जाती है। अब वो एक्टिवली उस कंसेप्ट को जो उन्होंने बनाया है उसको वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। इस तरह से ये साइकिल विल गो ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल बाय कॉप्स। तो स्टेजेस की बात की जाए, कंक्रीट एक्सपीरियंस की बात हो रही थी यहाँ पे। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल। लर्नर्स एंगेज इन द कंक्रीट एक्सपीरियंस and which could be anything from the real world situation to a hands on activity. Then there is reflective observation. After the experience, learners step back and engage in reflective observation. They would review the process, what they have felt, what kind of experience they have dealt with. They will review on this. So they analyze what happened and consider their feeling and identify the patterns. Then there is abstract conceptualization. Next, learners move to abstract conceptualization. They form new ideas, new concept, new hypothesis, or modify the existing one based on their reflections. And this stage involves the creating mental model or theories. After that, lastly, there is active experimentation. Finally, the learners put their ideas into action through active experimentation. They would just apply it, or they would implement that concept in the next situation. They test their theory in the new situation and learn from the outcome and adjust their mental models accordingly. So, as how educators can effectively incorporate the experiential learning into their teaching practices, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, उसके लिए फील्ड ट्रिप, साइट विजिट को इम्पोर्टेंस देनी होगी। So we should organize more and more field trips and site visits related to course material. For example, the teaching if you are teaching the environmental science, so take the student to the local ecosystem or the recycling plant, जहाँ वो देख के सीखने को मिलेगा उनको कि exactly उनको कहाँ पे क्या काम करना है आगे चल के। Encourage the students to observe, interact, and reflect on their experiences during their visit. Learning, service learning projects should be there. Like a student can work on project that addresses the real world issue while applying their theoretical knowledge. And in this case, we need to collaborate with the local organization or NGOs or a school to identify the meaningful service opportunities. Internship or dissertation की ज़्यादा ज़रूरत है. Learners could apply their theoretical knowledge of the classroom now to deal with the real world scenarios or real world issues. Simulations should be there, like create scenarios or simulation that mirror the real life situation जो हम लैबोरेटरी में नहीं कर पा रहे हैं, वो शायद सिमुलेशंस के थ्रू हम उसको उसको एक 3D इमेज और some kind of रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके हम वहां से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, in business courses, student can stimulate running a company or negotiating contracts. केस स्टडी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, to present the real world cases or problems for students to analyze, and they can work individually or in groups to propose solutions. लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बहुत जरूरी है जो साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक पावरफुल अप्रोच जो है उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लासरूम में और उससे उनको किस तरह से बेनिफिट मिल सकती है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फील्ड रिसर्च के थ्रू, इंटर्नशिप प्रैक्टिकम के थ्रू, सर्विस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू। ब्लेंडेड लर्निंग की बात की जाए तो ब्लेंडेड लर्निंग और हाइब्रिड लर्निंग, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है और क्लासरूम स्टडी की भी बात हो रही है। So it is a kind of mixed mode instruction approach and is an approach to education that combines the online education material and opportunities for interaction online with the physical place-based classroom method और face-to-face class time and web-based learning. तो इसका एग्जाम्पल है फ्लिप्ड क्लासरूम। तो आप एक पिक्चर देख रहे होंगे पहले, एक ट्रेडिशनल क्लासरूम है जहाँ पे टीचर इज जस्ट guiding the student by writing on the blackboard or directing them. But in the flipped classroom, teacher is also interacting with the student, or teacher actually provide the content to the student firstly, and the student prepare all those content, or they just go to their home and they watch several kind of online resources, the materials, and they study at their home. And next day when they come to the class, the classroom will be only the focus will be only on the discussion of those things what they have learned at home or what they have gained at home,
that is the classroom time will be engaged in the discussion process only. So here you can see in this the next picture the pre-class. In pre-class, the students were introduced to real-world problem or scenario. A problem is given to the student, and then they engage, they explore. They explore the various kind of videos, the online materials, and all. And then they student articulate their views online. And in classroom time will be used for instructor revisited the real world problem or scenario. Now instructor or the facilitator or the teacher डिस्कस टू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग। क्लासरूम में टीचर डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम निकल के आई क्या नहीं आई। यहाँ पीयर टू पीयर इंटरेक्शन भी होगा। स्टूडेंट अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग इन द कंप्लीट इंडिविजुअल ग्रुप एक्टिविटीज। तो इस तरह के जो मोड है दिस इज द फ्लिप क्लासरूम लर्निंग मोड। Problem based learning another innovative pedagogy where the learners are presented with the problem and through discussion within their group or activate their prior knowledge. And here the teacher is acting only as a facilitator, provided the limited guidance, while the majority of the work has been done by the students. तो एक एग्जांपल मैंने इसका लिया है कि लोकल पॉन्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ सडन डिक्लाइन इन द फिश पॉपुलेशन। एक अचानक से फिश की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। A water quality issue must be there, and learners' task is to investigate the cause of these problems and propose a solution for ecosystem restoration. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम दे दी गई, हैज बीन गिवन टू द लर्नर्स दैट हाउ दे कुड सॉल्व द इशू कि जो लोकल पॉन्ड है वहाँ पे फिश पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही है उसके लिए वो क्या सोल्यूशन बता सकते हैं। So first of all, there will be the problem exploration. First step is the problem exploration. The student firstly work in the small groups. Small groups, 4 to 5 का each का एक group बना लेंगे students, and they would just firstly they would discuss the problem. They ask questions like what do we already know about the fish population and water quality के बारे में पहले से क्या जानकारी है उनके पास, what additional information they just need to know, and what specific aspects of the ecosystem should they focus on. After that, research and data collection. Then a student gather the information from various sources like scientific articles, पढ़ के textbooks पढ़ के online resources से fish or field observations से they learn about the various factors affecting the जो affect कर सकते हैं fish population को। pollution, habitat loss, overfishing, all these things are there. water quality में nutrient का level कितना है पानी के अंदर, pH क्या है, temperature क्या है जिसकी वजह से fish का population decline हो रहा है। After that, there is hypothesis formation. Based on their research, the students form hypothesis. The excessive nutrient runoff from the nearby farm is maybe causing the algal bloom, depleting the oxygen level. ऐसा भी हो सकता है जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट है नियर बाय फार्म से वो निकल के आ रहे हों और पानी में जाने की वजह से वहाँ पे एल्गी का जो ग्रोथ है ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से वो ज़्यादा बढ़ गया हो और ज़्यादा एल्गल ब्लूम की वजह से ज़्यादा मोर ग्रोथ ऑफ एल्गी की वजह से जो सरफेस है सरफेस ऑफ द पॉन्ड इज कवर्ड बाय द एल्गी ओनली। देयर इज डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन जो अंडर बॉडीज हैं जो वाटर बॉडीज हैं लाइक फिश उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और जिसकी वजह से फिश का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। एल्गल ब्लूम की वजह से फिश को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और उसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रहा है। या फिर पेस्टिसाइड या इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स में ऑल्सो भी द रीजन जो आ रहे हो पानी के अंदर और उसकी वजह से भी फिश की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही हो। एक्सपेरिमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद। Students design the experiment or field studies to test their hypothesis, and they collect the water sample and measure their nutrient level, like they observe the aquatic quality and life data. Collaboration and discussion. Students collaborate within their group and with other groups. They share their findings, debate ideas, refine their understanding. Solution problem. Based on the evidence, students propose a solution and implement buffer zone around the pond to reduce the nutrient runoff को कम करने की कोशिश करेंगे जिससे algal bloom की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और वो अवेयरनेस भी रेज करने की कोशिश करेंगे फिशिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के और स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर जिससे पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें पॉन्ड के अंदर ना जाने पाए जिससे फिश की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है उसको रोका जा सकता हो। प्रेजेंटेशन और रिफ्लेक्शन। नाउ ईच ग्रुप जो सारे ग्रुप डिवाइड हुए थे इनिशियली वो अपनी अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे एंड दे प्रपोज सॉल्यूशन टू द क्लास
Reflection, discussion focus on what they have learned, challenges faced, and potential real world impact. They finally, all these things, the findings, they will propose it to their teacher. Then there is another innovative pedagogical strategy is their gamification. So gamification is not about game. So actually, it involves the or it applies the game mechanics इन अ नॉन गेम सिचुएशन. गेम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हुए एक इस तरह के स्ट्रैटेजी या इस तरह का हम डिफरेंट एप्स भी आ गए हैं अब बनाया जाता है जिसमें एक नॉन गेम सिचुएशन होती है. यहाँ पे वी जस्ट यूज द पॉइंट्स, बैजेस, लेडर बोर्ड्स एंड लेवल्स टू स्टिमुलेट द एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, लॉयल्टी. क्योंकि गेमिफिकेशन में हम देख सकते हैं कि बच्चों को जो है कोई फन लविंग होते हैं और उनको इस तरह से सीखना ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई लेवल्स को जस्ट क्वालिफाई कर करके उनको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो इससे वो उनका एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाता है किसी चीज को स्टडी करने में और वो काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस तरह की चीजों में और ये मोर एंगेजिंग है और फन है. तो gamification actually aims to create the meaningful learning experiences by tapping into our नेचुरल डिजायर फॉर कंपटीशन की एक फीलिंग जो है वो आ जाती है. अचीवमेंट एंड कोलैबोरेशन को अवार्ड और पॉइंट्स मिलते हैं जो स्कोरिंग होती है उसके बेसिस पे ये ज्यादा इंगेजिंग है. इसलिए भी गेमिफिकेशन का इम्पोर्टेंस आजकल बढ़ गया है. बट ये एक पूरी तरह से गेम हम नहीं बोल सकते इसको, ये नॉन गेम सिचुएशन है. एग्जाम्पल्स जो आजकल हैं गेमिफिकेशन के, आप इस पे जा सकते हैं. यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड द लिंक हियर. Like Kahoot is the one. Kahoot is an education platform that uses games to engage a student in the learning and it allows the educator to create their own quizzes. यहाँ पे disciplines के हिसाब से you can find out various questions over there and you can create the question in the form of MCQs or descriptive question or whatever. So there are the many options and you must go on such site. Kahoot is there and then Duolingo is there. Like Duolingo is for language learning through gamification, and it's a popular language learning app. And you can go to all these things or all these apps and create your own questions for the students and see what they whether they are having fun by and they are learning also and they are having fun also. Lastly, as I already told in the very start of this presentation, lastly I would like to correlate what NP 2020 and pedagogy, both these things I would like to correlate. So National Education Policy 2020 in its para, namely for para 4.4, 9.3D, para 11.6, para 12.1, para 12.2 and para 12.6 envisions the innovative pedagogical approaches. आप प्लीज इसको पढ़िए and their role in higher education. The policy emphasizes the holistic development of learner की बात हमेशा हो रही है which requires using innovative pedagogical strategies को अब हमें अप्लाई करने की बहुत जरूरत है जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कटिंग एज पेडागॉजी, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग, ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने का की जरूरत है. नाउ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज लर्नर सेंट्रिक इन अप्रोच को फोस्टर करने की बात करता है एंड teachers play a pivotal role in its implementation and the policy gives the teacher more autonomy in the choosing aspects of pedagogy. आप खुद से चूज करिए कि आपको किस तरह की pedagogy आपके क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करनी है so that they may plan the teaching learning in the manner they find most effective. उनके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सुटेबल है उसको आप प्लीज फॉलो करिए. Takeaways from this presentation would be active learning strategies encourage student engagement through activities like group discussion, case studies, problem solving पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. Then learner centered approach की बात की जाए, understand the student diverse background, उनकी learning need, their learning style. We should be aware of all these things. After that, incorporate real world context, relate concept to practical application. क्या है, हमने एक concept तो teach कर दिया, एक hypothesis पढ़ा दी, बट उसका practical application क्या हो सकता है, वो कहाँ पे इस चीज को apply कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बात की जाए तो रेगुलरली इवेल्युएट योर टीचिंग मेथड, फीडबैक लीजिए अपने स्टूडेंट से एंड चेंज योरसेल्फ आल्सो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट. Adapt and refine based on the student feedback and outcome. So thank you so much everyone for listening to me for around more than 1 hour. Thanks a lot. Now I can take questions if you have any. Thank you, ma'am, for sharing your ideas
skills. You have shared all about pedagogy, andragogy, heterogogy, and assumptions of adult learners, Yes. evolving theories of learning, and what are initiatives by national and state level governments for uh, diversity, uh, to know diversity of students and inclusion to it in the mainstreaming of the education. So thank you, ma'am. Thank you Thank very you much, so much, ma'am. sir. Thank you. If Thank you so much. any participants have query, please. तो anybody, if you have any query, कोई implementation guideline और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई अलग से गाइडलाइन दी जाएगी। एक गाइडलाइन है यूजीसी की तरफ से, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी ऑलरेडी। उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जो जो टीचर एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं है, जो हैं, उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं काफ़ी हद तक। तो उनके लिए सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है अपने क्लासरूम में, लेकिन जो नहीं है, उनके लिए शायद ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और वो कैसे फॉस्टर कर सकते हैं लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को, वो उस पे ध्यान दीजिए। और ये सारे मेथोडोलॉजी को आप अपनी क्लास में यूज़ करिए, थोड़ा ट्राई आउट करिए कि किस तरह से नई-नई चीज़ों, नए-नए तरीकों से पढ़ाने से बच्चों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? क्या बच्चों को आपकी क्लास अटेंड करना अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो उससे भी आपको आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी कि मतलब ये इंटरेस्टिंग हो रही हैं सारी चीज़ें। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपने क्लास में आप प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करिए ये सारे स्ट्रैटेजीज़। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू और सर। अब हम लोग 11:30 बजे अगले सत्र में मिलेंगे। जी, थैंक यू। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट, थैंक्स अ लॉट।